Friends, welcome to another session of Mahitul Amraze, Pathology in Unani Medicine. हमने इससे पहले जो इल्मुल अलामात का सेशन कवर किया है उसमें हमने कई चीज़ें देखी हैं। ख़ास तौर से हमने अमराज अलामात की तक़सीम देखी है और अलामात ज़ाहिरा की तशख़ीस के तरीक़े देखे हैं। अलामात बातिना की तशख़ीस के 6 उसूल बयान किए गए हैं। उसी में एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम डिसीज़ की डायग्नोसिस कर रहे हैं तो हम ये भी अंदाज़ा लगाएं कि बीमारी कौन सी है। जैसे हमने अमराज की तक़सीम में देखा था कि बाज़ अमराज असली होते हैं, बाज़ अमराज शिरकी होते हैं। एक्चुअल डिसीज़ कुछ और है और जो दूसरी डिसीज़ साथ में एसोसिएटेड हो गई है वो सेकेंडरी डिसीज़ है। तो प्राइमरी डिसीज़ कौन सी है, सेकेंडरी डिसीज़ कौन सी है, उसके अंदर हम तशख़ीस कर लें, फ़र्क कर लें, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कैसे हमें अंदाज़ा होगा कि मर्ज़ असली क्या है, मर्ज़ शिरकी क्या है, और इस वक्त जो बीमारी हम देख रहे हैं ये मर्ज़ असली है या मर्ज़ शिरकी है। तो इसका अंदाज़ा लगाने के लिए हमारे पास जो तरीक़े हैं उनमें एक ये है कि मर्ज़ असली उसके जो तरीके हम बताएंगे उससे पहले हम ये समझ लें कि मर्ज़ असली होता क्या है। तो मर्ज़ असली हमने जैसा कि पहले बयान किया था कि वो मर्ज़ है जो इब्तिदाअन और असलन पैदा हुआ है, जो प्राइमरी बीमारी है। मर्ज़ शिरकी हुआ है जो किसी दूसरे उज़्व की शिरकत की वजह से सेकेंडरी तौर पर पैदा हो जाता है। मसलन मैदे में सूए मिजाज का पैदा होना एक प्राइमरी प्रॉब्लम है, लेकिन मैदे के सूए मिजाज से जो सुदा हो जा रहा है उसको कहेंगे सुदाए शिरकी मैदी। मतलब वो सुदा जो मैदे की शिरकत की वजह से हो गया है, वो हेडेक जो मैदे की वजह से हो गया है, मैदे की बीमारी की वजह से, उसको हम सुदाए शिरकी मैदी कहते हैं। तो इन दोनों में कैसे हम फ़र्क करेंगे, अलामतों के ज़रिए से कैसे उसमें हेल्प मिलेगी, उसको इसमें देखते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो उसूल बयान किए हैं तिब्बा ने उसमें एक ये है कि मर्ज़ असली आम तौर से पहले होता है और मर्ज़ शिरकी बाद में होता है। मरीज़ से हिस्ट्री लेंगे कि भाई तुम्हें पहले पेट ख़राब हुआ था या पहले सर में दर्द हुआ था, तो वो बता देगा कि पहले मुझे कुछ तकलीफ़ पेट में हुई थी, पहले से भी पेट में तकलीफ़ है लेकिन सर में दर्द अभी हो रहा है। इसी तरह जैसे एक बात ये हो गई। मर्ज़ शिरकी के ज़ायल हो जाने के बाद भी दूसरा उसूल है कि मर्ज़ शिरकी ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी मर्ज़ असली बाक़ी रह जाता है। और मर्ज़ शिरकी की ख़ासियत ये है कि अगर मर्ज़ असली को ट्रीट कर दिया गया, मर्ज़ असली ख़त्म हो गया तो फिर मर्ज़ शिरकी बाक़ी नहीं रहता, वो ख़त्म हो जाता है। जबकि मर्ज़ शिरकी का मामला ये है कि वो ठीक हो भी जाए तो मर्ज़ असली ख़त्म नहीं होगा। So after discussion of different types of alamat and alamat zahira, that means of diagnosis of alamat zahira and means of diagnosis of alamat batina, it is important to consider what are the differential diagnosis of amraze asli and amraze shirki. So amraze asli, amraze khasa, it is also called as amraze khasa, and amraze musharaka or amraze shirki, amraze shirkiya. So what is the difference between in these two and how we differentiate whether it is amraze khasa or whether it is amraze musharaka. So first we have to know amraze khasa or amraze asli is that problem which is primarily developed in any organ. For example, any pathology in stomach, for example सूए मिजाज मैदा is a primary disorder, and मर्द शिरकी और अमराज मुशारका are those which are developed secondarily to any primary pathology. So if headache develops because of the connection with the stomach, because of सूए मिजाज मैदा, then it will be called as सुदाए शिरकी मैदी. So such type of disorders are called as secondary disorder, or we can call it as marz shirki. So how we will differentiate? There are certain principles. First one is
when the Amraze asli develops first, then the Amraze shirki develops. For example, if we take the history of patient, he will say that first I'm having the problem in the gastric symptoms. I'm having some features, some symptoms are there, in the issues are there previously, but now within few days I'm feeling this headache. So with the history we can identify which one is developed previously, and the Marad asli develops first usually. The second principle is if Maraz shirki is treated and it is relieved, even then the Maraz asli remains, the primary disease remains, even if the secondary disease goes. And if the primary disease is treated, or it is the patient recovers from primary disease, secondary disease also disappears. So it hints us which one is primary and which one is secondary. उसके अलावा कुछ बातें हैं जो उसूली तौर पर हमें मालूम होनी चाहिए कि कभी ऐसा होता है कि मर्द असली जो है इब्तिदा में महसूस नहीं होता, तकलीफ़ नहीं देता, और जब मर्द शिरकी डेवलप हो जाता है तब मर्द असली भी सामने आ जाता है। हालांकि बात यह है कि मर्द शिरकी बाद में डेवलप हुआ है, सेकेंडरी तौर पर डेवलप हुआ है, लेकिन उसको उसके अपीयर होने के वक्त मर्द असली मालूम हुआ है। और कभी कभी ये भी होता है कि मर्द असली पता ही नहीं चल रहा है, सिर्फ मर्द शिरकी ही सामने, सेकेंडरी डिसीज़ ही सामने आई है। तो ऐसे वक्त में हम क्या करेंगे? तो ऐसे वक्त में हमें कुछ चीज़ों का इल्म होना चाहिए, जैसे एनाटॉमी का इल्म होना चाहिए, जिससे हम ऑर्गन्स के इंटर रिलेशंस को समझ सकें। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स के जो पैथोलॉजी है और मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स की अफ़ाल की ख़राबियों का जो इल्म है वो भी हम जानें, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि किस उज़्व की ख़राबी से किस दूसरे उज़्व पर असर पड़ सकता है। बाज़ आज़ा में जो अक्सर अमराज़ होते हैं वो दूसरे आज़ा के अमराज़ के बाद होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सर के अमराज़ अक्सर मैदे की शिरकत से हो जाते हैं। तो अफ़ाल की ख़राबियों का हमें इल्म होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि ऐसी सूरत में हमें हिस्ट्री लेना चाहिए कि जहाँ जहाँ जैसे प्रॉब्लम हुआ है तो उस सिम्टम से रिलेटेड और कौन कौन से दूसरे रिलेशंस हो सकते हैं, उसका हमें हिस्ट्री लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जॉइंट स्वेलिंग लेकर आया एक पेशेंट, तो हमें ये मालूम करने के लिए कि वेदर इट इज़ ये सिर्फ इसी जॉइंट की प्रॉब्लम है या कहीं और भी डिसीज़ पहले स्टार्ट हो चुकी है। एहतियातन जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चलता है कि सोर थ्रोट पहले हो चुका था, तो हो सकता है कि ये रियूमेटिक फ़ीवर की अलामत हो। इसी तरह हम मुआयना भी करते हैं, तो मुआयना में भी हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो दूसरा ऑर्गन इस डिसीज़ से रिलेटेड है उसका भी एग्ज़ामिनेशन कर लें, ताकि पता चले कि उसमें कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। The third very important principle in the condition is that sometimes marade asli do not appear, and could not the symptoms are not apparent, but when marad shirki appears, then marad asli also appears. So both primary and secondary disease appear simultaneously. That is very confusing state, which one is primary disease, which one is secondary disease. Sometimes the primary disease even do not appear at all. So in that conditions we have to what is our approach and what we need so that the correct diagnosis can be made. So first one which is important is we have to know the anatomical relations. So anatomical information is very important so that we can identify which organs are related to which one. Similarly, we should know the pathological relation. Certain disorders are interconnected. For example, the disease, the pathology in liver and pathology in kidney, these two are interrelated and many times they occur simultaneously. So even
the disease, the features of kidney disease may be because of which disease in the liver also. So for these connections should be identified with the help of pathology and the Ilmul Ahwal and Ilmul Asbab, which are already mentioned, already explained. And sometimes we need to interrogate the patient. So interrogation is very important. History taking is very important. We should rule out all the possible causes with the certain questions. For example, a patient came to you and he is presenting a problem with joint swelling, knee joint swelling. Then in that cases we have to interrogate all the possible causes with the help of certain important questions. For example, we may ask whether he has developed any pharyngitis or sore throat previously, because sometimes in rheumatic heart disease patients suffer from pharyngitis, sore throat, features of infections of the throat, and then after few time after a few months, and the patient develops pathology in the joints. So for correct diagnosis of rheumatic heart disease, this question is very important. So interrogation is very important to identify which disease is primary, whether the disease of whether primary disease is rheumatic heart disease, rheumatic fever, or whether the arthritis is primary disease. So in this case, arthritis may be a secondary manifestation. And sometimes we need to examine the patient with very much very much attention. So for example, cardiac disease, patient is presenting with pulmonary features, breathlessness, etc. But we have to consider the examination of heart also, because breathlessness, although it is common feature of respiratory disease, it may be a feature of cardiac disease, or cardiac disease has happened first and then it is because of relation with the lungs, and the lungs are involved, and then breathlessness is developed. So these are certain principles for differential diagnosis of Amraze asli or primary disease with Amraze shirki or secondary disease. इसके बाद हमने जो अलामतों का एक जनरल डिस्कशन पढ़ लिया है, उसके बाद अलामतों में एक बहुत अहम चीज़ होती है कि मिजाज की अलामतें हम कैसे समझेंगे, क्या तरीक़े हैं जो मिजाज की तशख़ीस में मुआविन होते हैं, और मुख्तलिफ़ मिजाजों को जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसमें पहले जिसमें जो अलामात अमज़जा का तज़किरा मिलता है, उसमें ख़ास तौर से इब्न सीना ने अलामात मिजाज की 10 अहम जिनसें बयान की हैं, जिनके ज़रिए से तबी तौर पर मिजाज को जाना जा सकता है, और इवन गैर तबी मिजाज की भी तशख़ीस में ये 10 चीज़ें मुआविन होती हैं। अलबत्ता इससे पहले अतिब्बा ने बजाय इन 10 अजनास के कुछ किसी ने 5 अजनास बयान किए थे, राज़ी ने अलग 5 बयान किए थे, और मजूसी ने अलग 5 बयान किए थे। अगरचे उनका तरीक़ा बयान डिफरेंट था, लेकिन इब्न सीना का जो तरीक़ा बयान है उस पर अब इत्तेफ़ाक़ है। जमहूर अतिब्बा ने बातें बताई हैं कि ये 10 अजनास हैं जिसके ज़रिए से आसानी के साथ हम मिजाज को मालूम कर सकते हैं कि इस बंदे का मिजाज गर्म है या सर्द है, हार है या रत्ब है, याबिस है, या कोई मरकब मिजाज है। तो जो हमने टोटल 9 किस्में बयान की हैं मिजाज की इंट्रोडक्शन में और बेसिक फंडामेंटल्स के सेशन में, उसमें वो सारे अमराज, सारे मिजाज इन अलामतों के ज़रिए से आइडेंटिफाई हो सकते हैं। और इन अलामतों में जालिनूस ने सबसे पहले अलामतों मिजाज के बारे में अच्छी बहस की थी। जालिनूस की किताब फिल मिजाज में वो बहसें देखी जा सकती हैं। उसमें उसने ये बयान किया था कि 3 चीज़ें हैं जो हमें मिजाज की शनाख्त में मदद करती हैं। एक चीज़ है तबीयत, दूसरी चीज़ है बदन,
اور تیسری چیز ہے نفس۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کے ذریعے جن کے مختلف فیچرز سے ہم مزاج کو سمجھتے ہیں۔ تو کچھ فیچرز یہ جو ہے ہم 10 بیان کریں گے۔ کچھ فیچرز طبیعت سے متعلق ہیں، فزیولوجیکل فنکشنز ہیں، کچھ فیچرز بدن سے متعلق ہیں، یعنی بدن کی ساخت سے متعلق ہیں، اور کچھ فیچرز ہوئے ہیں جو نفس سے متعلق ہیں، نفسانی عوارضات سے ملتے ہیں۔ تو یہ 10 ہم کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے ملمس، کہ مریض کا مزاج تشخیص کرنے کے لیے ہم اس کو ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں اس کا ٹچ کیسا ہے، گرم ہے یا سرد ہے، بارد ہے یا رطب ہے، نرم ہے یا سخت ہے، اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ مزاج کیا ہوگا۔ دوسری چیز ہے لحم شحم، مریض کے اندر گوشت کی مقدار مریض کے بدن میں زیادہ ہے یا چربی کی مقدار زیادہ نظر آ رہی ہے، اس کی ساخت سے، اس کے حلیے سے ہم اس چیز کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ ایگزامینیشن سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بدن لحمی ہے یا شحمی ہے، یا دونوں چیزیں زیادہ ہیں یا دونوں چیزیں کوئی ایک کم ہے یا دونوں کم ہیں۔ اسی طرح بالوں کی گروتھ کیسی ہو رہی ہے، بال کیسے ہے، ان کی شکل کیا ہے، ساخت کیسی ہے، اور ان کا کلر کیسا ہے، اس سے مختلف قسم کے مزاج کے بارے میں اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح رنگ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سفید رنگ ہے یا زردی مائل ہے یا سرخی مائل ہے یا پھر سیاہی مائل ہے، یا مختلف قسم کے علاقے میں مختلف رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں جو ویریشنس ہوتا ہے، جیسے اب یورپین وائٹس جو ہیں تو وہ ظاہر ہے سارے کے سارے وائٹ ہیں، لیکن ان میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے۔ تو یہ مزاج کا تعلق ریلیٹیو ایک ٹرم ہے، یہ ہم ہر علاقے کے اعتبار سے بھی ہم مزاج کو سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں کون ہار ہے کون بارد ہے، اس علاقے کے اعتبار سے، اور مختلف ریس کا بھی اندازہ کرتے ہیں۔ افریقنس اور یورپینس کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون زیادہ حرارت کی طرف ہے، کون رطوبت کی طرف ہے۔ تو مزاج ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، ہم ان جنرل بھی بات کرتے ہیں پوری انسانوں کے اعتبار سے، پھر انسانوں میں مختلف ریس اور مختلف علاقے کے رہنے والوں کے اعتبار سے، پھر ان مختلف علاقوں میں بھی جو فردر تقسیم ہو جاتی ہے اور مختلف قبیلے ہو جاتے ہیں، اس کے بھی اعتبار سے ہم لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ بنیادی اصول ہیں جن کے ذریعے سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب جس علاقے میں کوئی طبیب پریکٹس کر رہا ہے، اس علاقے کے لوگوں کا ظاہر ہے کہ انڈیا میں جو پریکٹس کر رہا ہے وہ انڈیا کے لوگوں کے حالات جانتا ہے کہ ہار لوگ ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، بارد لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ حیت اعضاء بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے مفاصل نمایاں ہیں یا چھوٹے چھوٹے ہیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حرارت غالب ہے یا برودت غالب ہے، اور اعضاء کی اور نوعیت کیا ہے، کس قسم کے بنے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ کیفیت انفعال اعضاء، کہ اعضاء کیسے متاثر ہو رہے ہیں، مثلاً ٹھنڈا پانی پینے سے انہیں کچھ تکلیف ہو جاتی ہے یا گرم پانی سے پینے سے کچھ تکلیف ہو جاتی ہے، تو کس قسم کے چیزوں سے اعضاء میں کیا تأثر پیدا ہو رہا ہے، یہ بھی ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے۔ نیند اور بیداری کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا ہے کہ نیند کیسی ہے اور کتنی دیر میں نیند پوری ہو جاتی ہے، کتنا جاگنا کافی ہوتا ہے، تو ان سب کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں۔ جیسے ہار مزاج کے لوگوں میں نیند کم ہوتی ہے، بارد مزاج کے لوگوں میں نیند زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح خشک اور رطب لوگوں کا معاملہ ہے کہ نیند خشک لوگوں میں کم ہوتی ہے اور رطب لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اعضاء کیسے ہیں، افعال کیسے ہیں، اعضاء کے افعال بہت فاسٹ حرکتیں ہیں اس کی یا بہت سلو ہے، تو زیادہ حرکتیں تیز ہیں تو یہ اعضاء کی حرارت کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور حرکتیں اگر کمزور ہیں اور سست ہیں تو یہ افعال اعضاء کی سستی برودت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اسی طرح ہم فضلات بدن دیکھتے ہیں کہ جو بدن سے فضلات خارج ہو رہے ہیں وہ ان کا رنگ کیسا ہے، اگر رنگ میں زیادہ کلر نمایاں ہیں تو یہ حرارت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اگر کلر نمایاں نہیں ہیں تو یہ برودت کی طرف اشارہ کرتی ہیں یہ چیزیں۔ اس طرح بو اگر بہت زیادہ ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ یہ جو مرض ہے، یہ جو شخص ہے اس کا مزاج حرارت والا ہے، اور بو کم ہے تو یہ برودت کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ چیز۔
इन्फ़ियालात नफ़सानिया भी हम देखते हैं नफ्स को देखने के लिए कि इसके जो इन्फ़ियालात हैं, जो इसके इमोशंस हैं वो कैसे हैं। कुछ लोगों के अंदर गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कुछ लोगों को गुस्सा बहुत नहीं आता ही नहीं है, बहुत वक्त लगता है आने में। तो वक्त लग रहा है, गुस्सा नहीं आता है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये मिजाजन बारिद है। और बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है तो मिजाजन हार है। तो ये चंद अहम अजनास हैं जिनके ज़रिए से हम बीमारियों के भी मिजाज का पता लगा लेते हैं। और लेकिन जो असल है वो तबई मिजाज का अंदाज़ा इनसे लगता है। बीमारियों का जैसे मलमस है, इससे बीमारियों का भी अंदाज़ा लग जाता है। लहम शहम है, शार है। तो बीमारियों के सुए मिजाज के लिए भी ये अगरचे हेल्पफुल हैं, लेकिन इनसे तबई मिजाज की तशख़ीस में बहुत मदद मिलती है। और चूँकि ये तबई मिजाज की तशख़ीस पैथोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ इसकी जो है एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमने आपको बता दिया कि अलामात अमज़जा में अजनासे अशरा को कंसीडर करना इम्पोर्टेंट है। और ये सारी बातें हैं, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो, जैसे ये सारी बातें हमने बताएं कि लहम शहम, कलर और इवन लॉन, इसका ताल्लुक़ तबीयत से है, सॉरी इसका ताल्लुक़ जो है इन सब का ताल्लुक़ बदन से है। इन्फ़ियालात नफ़सानिया का ताल्लुक़ नफ्स से है। और ऐसे ही जो अफ़ाल आज़ा हैं, नौम यक़ज़ा हैं, फ़ज़लात बदन हैं, इनका ताल्लुक़ तबीयत से है। तो ये इस तरीके से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बदन कैसा है, बदन का क्या मिजाज है, तबीयत का क्या मिजाज है और नफ्स का क्या मिजाज है। अगरचे ये तीनों चीज़ें अलग अलग बयान की जाती हैं, लेकिन तीनों चीज़ें एक इंसान में एक साथ वर्किंग हैं और काम कर रही हैं, इसलिए कलेक्टिव मिजाज को इन तीनों के पैरामीटर से कलेक्टिव तौर पर मिजाज का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा आसान होता है। For identification of alamat of mizaj, these are 10 parameters. Usually for normal mizaj, for identification of normal mizaj of an individual, these are 10 parameters with the help of which we can identify what is the mizaj of this person and how this person can be diagnosed of having har mizaj or barid mizaj. We have discussed earlier in the session of fundamental principles that there are 9 types of mizaj. So with the help of these features we can identify which one is the person belong to. So first one is malmas. With the help of touch we can identify if it is har or barid. Then if it is soft, then it is a case of rutubat. If it is hard feeling of hardness in the touch, then it is a case of it is related to yabusat, dryness. Similarly, the bulk of muscle and bulk of fat the person is having, so we can identify if muscle is more, it is a case of he is having har mizaj. If fat is more, if he is having barid mizaj. Usually in females fatty components are more, so usually the females are considered colder than males. Then in terms of hairs, the shape of hairs, the thickness of hairs and the growth of hairs, all things are considered for identification of mizaj. So excess hairs are related to the yabusat, and thinness of hair is related to rutubat. So in this way different parameters are applied. And lawn color is also important. The person who is having har mizaj will be probably reddish in color. A person who is having cold mizaj may be possibly whitish in color. So there are different racial differentiation variation also. So mizaj is a very relative term. Mizaj is considered in terms of whole human being. It is also considered in terms of different races, and among races we also see in different types of geographical
locations. We see among these individuals who are more inclined to hararat, who are more inclined to rutubat. So it is a very relative term, and it is a general discussion for a person who is practicing in any particular area. He may identify with the experience who are those who can be categorized into hot mizaj individuals, who are in cold mizaj individuals. Similarly, other mizaj may be understood. And the organ structure is also important, whether the organ structure is, the joints are big or it is small. So different organ structure indicates. Similarly, the chest is narrow or wider. So in case of har mizaj, the chest is wider, mafasil or joints are wider, and vice versa. So the organ structure hayat adha can be considered, and influence of adha or infial adha, whether what type of influence the patient is observing. For example, whether cold water is suitable for him or not, whether hot water is suitable for him or not. Accordingly, the mizaj can be analyzed, and the sleep is different in different types of mizaj individuals. For example, har mizaj or yabis mizaj individuals usually need a lesser time for sleep. For organ functions, for example, if the movements of the individual is very fast, it indicates hararat, and if it is low, he is slow, it indicates burudat. In terms of fadlat badan, we see if the color and odor of the fadlat badan, whether it is urine or stool, if it is more, color is more, and the odor is more, then this indicates that the person is having har mizaj. Similarly, opposite is observed in case of barid mizaj individuals. In terms of infialat and afsaniya, if person is having more features of anger, and he used to be very joyful, or if he is very quick in emotional issues, then he may be considered as a har person or yabis person. And in Radh person and in colder persons, the emotion is usually slow. Uh, the patient do not become emotional more often and quickly. He takes some times, and the emotions develop gradually and goes off gradually. So these are very elaborated, complete, and distinguished features mentioned by Ibn Sina. Previously, there are 5 types of features by Razi and Abu Sail Majusi and Ibn Abbas Majusi, etc. Those are authors also have explained their all the details, but their style of their approach is different. But this approach is now widely acceptable, and in Unani medicine, these Ajnase ashra 10 parameters are used for assessment of mizaj of an individual. It is important to note that with the help of these parameters, we identify not only the psychic components, but also the physiological components and the structural components of the persons. इसके बाद कुछ अलामात हैं जो कि सुई मिजाज हार, सुई मिजाज बारिद, रत याबिस से मुतालिक हैं, तो उनको भी देखना ज़रूरी है कि वो कौन कौन सी अलामतें हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के सुई मिजाज का इशारा करती हैं. तो ये सारे फ़ीचर्स हमने मुख्तलिफ़ किस्म के असबाब में मुख्तलिफ़ एतबार से देखे हैं. इनको एक क्विक रिवीज़न यहाँ पर देख लेते हैं कि बदन की हरारत में सुई मिजाज हार के लोगों में बदन की हरारत में ज़्यादती होती है, बुखारों में तकलीफ़ होती है, हरकत से सुकूत क़ुव्वत जल्दी हो जाता है, प्यास ज़्यादा लगती है, मैदे में सोजिश होती है, नब्ज़ में ज़ोफ़, सूरत और तवातुर, इस तरह की अलामतें मिलती हैं. गर्म अशिया और गर्म मौसम में तकलीफ़ होती है, और सर्द अशिया और सर्द मौसम से राहत होती है. सो वी हैव सीन डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट Ilmul Asbab.
different types of diseases. What are those features which indicate sui mizaj har? Such as features which are related to temperature. If temperature is raised and fever develops often, and the moments are any kind of moment is responsible for weakness, then these are alamat of sui mizaj har. Similarly, excessive thirst and burning sensation in meda, and the rapid pulse. Similarly, if he is he is comfortable with cold things, and he is feeling discomfort with hot things. So these are alamat of sui mizaj har. What are alamat of sui mizaj barid? The digestion will be less, thirst will be low because of sui mizaj barid. Mafasil will be very relaxed. Fevers, for example, balgami fever or cold fevers, fevers which is caused by cold matter. Fever may be caused by hot matters and cold matters. So if fever is developed which are related to cold matters, balgami bukhar, recurrent balgami bukhar is common, or patient is suffering from cold cough more often, cold and coryza. He feels discomfort with cold things and cold season, and he feels himself comfortable with hot things and hot season. Then these are alamat of sui mizaj barid, cold morbid temperament. Certain features are indicative of sui mizaj ratb or wet temperament, wet morbid temperament, which are very much related with certain features are related to sui mizaj barid, and the additional features are the tarahul or lethargic condition, or very body inactivity, condition of inactivity, and features of excessive salivation and excessive lacrimation. These are features of sui mizaj ratb. Features, for example, development of diarrhea and loose motions. Indigestion is also a feature of sui mizaj ratb. Excessive sleep is a sui mizaj key feature of sui mizaj ratb, and edema in any either on the eyes or anywhere, it is also case of feature of sui mizaj ratb, and the patient feels discomfort with the use of murattibat. Then these are features of sui mizaj ratb. Certain features of sui mizaj barid are dryness of jild, decreased sleep, weakness. Patient feels discomfort with the use of dry things or yabis things, and he feels comfortable when he is using murattibat or ratb stuff. So these are alamat of sui mizaj yabis. He also feels comfortable in dry atmosphere, and he feels discomfort when he use the hot water and oils are applied on the skin. It is absorbed very fast on the skin because of sui mizaj yabis or dry mizaj.